Good morning to all of you. I am Mukesh Singh Bagel. I teach you a subject named Manufacturing Process. Today I will discuss a topic centrifugal casting. As you know, my dear student, in a previous lecture, I already discussed about types of casting and I already discussed about different types of pattern allowance. Today I will discuss only centrifugal casting. So let's start from centrifugal casting. As you know that when we discuss about centrifugal casting, it work on basic principle of centrifugal force on a rotating component. As I told you, when we discuss about centrifugal casting, it's based and its basic principle of centrifugal force on a rotating component. In this process, a mold is rotated about the central axis when the molten metal is poured into it. My dear students, when we discuss about centrifugal casting, a word centrifugal force and the centrifugal force means when the body rotates. So a force which is act move outward, that force is known as the centrifugal force. As I explain this centrifugal force by the help of an example, suppose Suppose I have a object in my hand. You can see by this example. Suppose this is an object in my hand. When this object is rotate, a centrifugal force move outward. So we can say that when a force moves outward, so when we discuss about centrifugal casting, in a centrifugal casting, a centrifugal force is act on a rotating component. And what is the rotating component in the centrifugal casting? A mold is rotate. In a centrifugal casting, a mold is rotate. So you can see in this slide, in this process, a mold is rotate. In this process, a mold is rotate about its centrifugal axis when the molten metal is poured into it. So first we understand what is the centrifugal force. The centrifugal force when a body is rotate, a centrifugal force move or act outward. So when we discuss about the centrifugal casting, when the mold is rotate, a centrifugal force act on the rotating mold. So you can say that in this process, a mold is rotate about its central axis when the molten metal is poured into it. When the molten metal is poured into it, the mold is rotate. A centrifugal force act on a molten metal due to this rotation. अब centrifugal force कैसे act कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, जब मोल्टेन मेटल को फिल करते हैं तो मोल्ड इसमें क्या करता है, रोटेट करता है. When the mold is rotate, the centrifugal force on the rotating mold. The mold is rotated until the whole casting solidified. The slag, oxide, and other inclusion being lighter gets separated from metal and segregate toward the center. So, my dear student, this is a simple definition of centrifugal casting. So, but in the next slide, I will explain the practical centrifugal by the help of diagram. I will explain the practical mean of this centrifugal casting and how the slag oxide and the other inclusion being lighter and how the slag is separated from the molten metal. So let me explain the next by the help of the next slide, the centrifugal process. So my dear student, this is the diagram. In this diagram you can see a ladle. In a ladle we have a molten metal. The molten metal is carried from the furnace. हमने फर्नेस से यहाँ पर मोल्टन मेटल को हीट किया and it is converted to the liquid or molten metal. It is carried by the ladder and it is a powering basin. You can see in the figure there is a powering basin. एक powering basin भी है हमारे पास. उस powering basin में हम देखेंगे कि इस जो हमारे पास molten metal है, उस molten metal को हम power करेंगे powering basin में and after that a mold is connected to the pouring basin. इस फिगर में आप देखें कि mold is connected. mold किससे connected है? By the pouring basin. This is the mold. You can see this is the mold.
I also show some. I also show the show in the diagram. This is a mold, and you can see there is a two type of roller: the top roller and the bottom roller. In between the rollers, we have a mold, and in between this roller, the mold is rotate by the help of the roller, and it have a motor. By the help of the motor, the electricity supply and the rotor is, and the mold is rotated continuously until the molten metal is solidified. molten metal जब तक घूमता रहता है, जब तक कि मोल्ड जब तक घूमता रहता है, जब तक कि molten metal solid नहीं हो जाता. तो इस फिगर में आप देख सकते हो, as you see in this by the help of this pen you can understand this is a horizontal axis and the molten and the mold is rotate on this axis. जब मोल्ड रोटेट कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, आप समझ सकते हो इसके अंदर हमने क्या किया, मोल्ड के अंदर हमने मोल्टन मेटल फिल किया. तो जब ये बॉडी रोटेट होती है, ठीक है, जब बॉडी रोटेट होगी तो जो मोल्टन मेटल हम कंटिन्यूसली फिल कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ द पोरिंग बेसिन, बाय द हेल्प ऑफ द पोरिंग बेसिन जब हम मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर फिल करते हैं, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मोल्टन मेटल है आउटर वॉल ऑफ द मोल्ड की बाहर की दीवारों की तरफ चला जाता है. ठीक है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड. जब हम इसको घुमाएंगे, जब इसको हम घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द मोल्टन मेटल मूव्स टूवर्ड टू द आउटर वॉल ऑफ द मोल्ड. जो मोल्ड की आउटर वॉल्स है उसकी तरफ मोल्टन मेटल फिल हो जाता है, और जो स्लैग है यानी कि जो डस्ट है, जो कचरा है, वो कहाँ रह जाता है, सेंटर पे रह जाता है. तो हम ये कह सकते हैं स्लैग and the molten metal is separated by the help of the centrifugal casting और by the help of the centrifugal force. तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि जैसे हम मोल्टन मेटल को फिल करते हैं मोल्ड के अंदर, मोल्ड कंटिन्यूसली रोटेट करता है. मोल्ड जब तक रोटेट करता है जब तक कि मोल्टन मेटल सॉलिड नहीं हो जाता. ठीक है, और इसमें मेन पर्पस यही है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का कि इस पर्टिकुलर जगह पे हमें कोर की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, हम जिस तरह के मोल्ड हम बनाते हैं, और दिस इज द परमानेंट मोल्ड, ये सब परमानेंट मोल्ड रहते हैं. इसके अंदर हमें मोल्टन मेटल को फिल करना है, और फिल करने के बाद हमें कंटिन्यूसली रोटेट करना है बाय द हेल्प ऑफ द मोटर. यू कैन सी दिस फिगर, मोटर की हेल्प से हम मोल्टन मेटल को फिल कर रहे हैं मोल्ड के अंदर, और इसको कंटिन्यूसली रोटेट कराते हैं. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस विच इज वेरी हेल्पफुल टू मेक द पाइप्स, ट्यूब्स, है ना. हमें कोई हॉलो सिलेंडर बनाने हैं, उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रीफ्यूगल दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मेनली हॉलो shapes. If you want to make the hollow shape by the help of the casting, so centrifugal casting is very useful. So यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को, जो अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसको डिजाइन किया. तो आप देख सकते हो कि यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोलर. One is top roller and another is bottom roller. So you can see this is the top roller and the bottom roller, and you can see this is the mold. As I told you, this is a permanent mold. ठीक है, by the help of this permanent mold we can make the objects or parts of the or product. So this is the casting. This is the you can see in a yellow color there is a casting. एक कास्ट यानी कि ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है, वो किसके हेल्प से बनाया है, मोल्ड की हेल्प से बनाया है. मोल्ड के अंदर हमने मोल्टन मेटल को फिल किया और एक परमानेंट कास्टिंग या ऑब्जेक्ट तैयार हो गया. ठीक है, दिस इज द मोटर, दिस इज द मोल्टन मेटल एंड दिस इज द लैडर. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, बट इट इज अ वेरी important, and this is a very useful method for the casting. So my dear student, you can understand the centrifugal casting. I hope you can understand the centrifugal casting. centrifugal casting क्या होती है और इसका पर्पस क्या है. आपको सबसे पहले इसमें ये समझना है कि centrifugal casting जब भी हम बात करते हैं, the basic principle centrifugal casting is on the centrifugal force, and the centrifugal force act due to the rotating component. अब इसमें rotating component क्या है, mold is a rotating component. जब उसमें मोल्ड रोटेट करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने का क्या बेनिफिट है, जो हमारे पास मोल्टन मेटल है वो आउटर वॉल से जाके चिपक जाता है. हम ये कह सकते हैं आउटर वॉल की तरफ चला जाता है, तो जो स्लैब होता है वो सेंटर पर रह जाता है. तो इससे हमारे जो ऑब्जेक्ट है, जो प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है ना. हमें कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है. तो हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन यू कैन अंडरस्टैंड द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. सो थैंक यू वेरी मच, एंड नए टॉपिक के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में. तो थैंक यू वेरी मच.